Assalamu alaikum everyone. I am Azhar Imran and welcome to the class of Current Affairs for CSS. In today's class we are going to discuss contemporary international issues. Perhaps when we talk about contemporary international issues, let me make a clarification, because whole of the current affairs is about the contemporary international issues, and whole of the current affairs syllabus is to study of the contemporary international conflicts and developments and international issues. But when we talk about in this lecture, what we are going to talk about specifically in this lecture about contemporary international issues, perhaps some of the most prominent international issues which have just recently emerged. Those issues which have emerged in post 9/11 world order, in world order that has been developing and has been shaped by the war on terror, and that world order that has resulted since the decline of the Soviet Union and rise of America as a unipolar power in world politics. So these are the issues that we call the contemporary international issues that has emerged after the defeat of Soviet Union, rise of America as a world superpower, then war on terror, and the developing of the contemporary world. So in contemporary international issues we are going to discuss globalization and development, how globalization has led to the world development, the idea of the globalization and the idea of development and their correlation, and how globalization has positively and negatively contributed to the international issues and contemporary world, and what are the problems that the globalization has created that we see in today's world. For example, one of them is global economic movements and crisis. The second is populism, right-wing politics, Brexit and challenges to liberal world order. The third one is of course the Islamophobia. So these are the issues that we are going to discuss in today's class. Okay, so let me start with what is globalization. Let me start where we ended in our last class and last lecture of international political economy and international financial institution. I was talking about the neoliberalism. So neoliberalism was an ideology that very much developed to the world economic system at a time when the world went through the process of three major changes. First, the technological revolution, what we call the IT revolution that we witnessed in 1980s and 1990s, the rise of computers, the internet, the information technology, the robots, the telecommunication sector, the transportation sector, the online banking, the online investment, trade and finance, the rise of the technological revolution. That was the first. Second, that we witnessed the political change in the world, the rise of America as a world superpower, decline of Soviet Union and America as a sole superpower. That was the second change we witnessed. And third, of course, was the change in the world economic system, that was from economic liberalism to neoliberalism. And this neoliberalism changed and transformed the world order into globalization. So what is globalization basically? जो ग्लोबलाइजेशन का आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वी टॉक अबाउट इन अ सिंपलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन मीन ग्लोबल विलेज. एंड व्हाट डू वी मीन बाय ग्लोबल विलेज? जैसे आपको पता है विलेज में या गांव में तमाम लोग जो हैं वो एक तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक तरह का लाइफस्टाइल होता है, एक तरह की इकोनॉमी होती है, एक तरह की फूड्स होती हैं, एक तरह का कल्चर होता है, एक तरह का ड्रेस होता है और एक ही तरह के घर वगैरह हाउसिंग होता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन एज अ ग्लोबल विलेज, इट मीन्स बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी वजह से दुनिया के अंदर 1990 के बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो दैट डेवलपमेंट हैज़ लेड टू अ कॉमन वर्ल्ड ऑर्डर, एंड दैट वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. And that globalization has created a global village where people have similar kind of thinking, the people have similar kind of ideas about life, about employment, about needs, about food, about culture, about language. और इसके साथ साथ लोगों का जो है वो एक ही तरह के स्ट्रक्चर और सिस्टम के अंदर अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं. तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. So this is the basic concept. Let me give you a more organic definition of globalization. When we talk about globalization, so globalization means the development or the rise of common world system or a universal world system based on one common political system. And what is in common political system? Liberal democracy, human rights, constitutionalism, freedom of speech and rule of law.
This is the first part of the globalization, that the globalization has led to create a common political system in the world, and that common political system is based on democracy, constitutionalism, freedom of speech, rule of law, and human rights. Just look at that, how many democracies we had back in 1940s and how many democracies we had back in 1990s, and now in today's world we have almost 90% of the world having democracies, constitutionalism, rule of law, freedom of speech, except the some world parts or regions. Even those democracies can be good or bad, but there is a system where democracies and elections are practiced. So the globalization has led to the common political system based on democracy, constitutionalism, human rights, rule of law, freedom of speech. The second, the rise of common economic system. The globalization has created a common economic system. And what is that? Free market economy, global currency, dollar as global currency, online economic activities, common economic needs, global employment, exchange of online investments, and financial markets, and the role of technology in creating the common economic system. And what is that common economic system? It is based on free market economy, that now a Pakistani can buy any product from anywhere in the world through his credit card or Visa debit card, just by using the app in his or her cell phone and ordering it online, and it would be delivered within a couple of working days. That is the idea of the common economic system based on free market economy. Then the common economic system has also created the employment across the world. For example, now you are working as a freelancer, sitting in your house anywhere in the world, earning the employment needs. So that is the second part of the globalization, the common economic system. Dollar is the global currency now, and there is no more any unavailability of products or inaccessibility of the products from any region of the world to the other region of the world. So that is the idea of common economic system. Our common economic system is based on global currency of dollar, free exchange of currencies, and balance of payments, then employments, global employments, access to the global products, and of course global immigrations and migrations and employments by the multinational companies. And this common economic system is ruled and regulated by IMF, World Bank, and WTO. So we have a common global economic system under these structures, ruled and controlled by IMF, World Bank, and WTO. कि आपके पास IMF और वर्ल्ड बैंक है, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जो पूरी दुनिया की करेंसी को रेगुलेट करते हैं. द थर्ड पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज द कॉमन इंटरनेशनल सिस्टम, वेयर the states are bound under common international law in the form of UN Charter. They have to agree with the human rights, they have to agree with the rights of minorities, with the human rights, with the freedom of media, and they have to channel their course of action under international law. So for example, Kashmir is no more an issue between India and Pakistan. It's a human rights issue, so it's an issue for all the organizations working for human rights. So for example, refugee crisis is no more an issue between the two states. It is an issue between international organization. It is an issue of UNO as well. So for example, nuclear proliferation is no more an issue between Pakistan and India. Any kind of conflict between Pakistan and India could lead to the global catastrophe in South Asia and Europe and America. So this is the idea of globalization, that one economic need or system is tied with the other economic system, and one individual is tied with the other human, and there is no escape from that. So that is the idea of globalization. So let me give you a definition, and then we will go for pros and cons of definition. कि globalization के benefits क्या हैं, advantages क्या हैं, और negativities क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि globalization का link global economic system के साथ कैसे बनता है, और किस तरह global economic movements और crises डेवलप हुए हैं. Then we will go to डिस्कस के किस तरह पॉपुलिज्म और राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई है, जिस वजह से ब्रेक्जिट और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर आया है, और फिर हम इस्लामोफोबिया को देखेंगे एट द एंड. ओके, सो when we talk about globalization, as long as this definition is concerned, globalization is a spontaneous, continuous process, phenomena, and movement that has led the world into a common political system, common economic system, and a common international legal and social system based on information technology,
exchange of knowledge, free access of knowledge, and common communication between different people of the world. So that is the idea of the globalization. कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक ऐसा आइडिया है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने लोगों को दुनिया के मुख्तलिफ स्टेट्स को और उनके सिटीज़न को कॉमन पॉलिटिकल, कॉमन इकोनॉमिक और कॉमन इंटरनेशनल सिस्टम दिया. सो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ यूनिवर्सलिटी ऑफ political, economic and international system based on people's, based on information technology, spread of knowledge, accessibility and availability of information, and fast and rapid communication and transportation system. So that is globalization. So now let's look at the advantages of globalization. Globalization के advantages क्या हैं? So there are many advantages of globalization, but we will look primarily 5 to 6 advantages of globalization. पहला जो एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम. अब कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है कि अगर आज आपको अमेरिका से कोई मेडिसिन मंगवानी है तो आप इमीडिएटली वो मेडिसिन जो है ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं उस कंपनी से, और वो कंपनी जो है विद इन 5 to 6 वर्किंग डेज वो आपको डिलीवर कर देगी. आपने बुक्स खरीदनी है, यू कैन ऑनलाइन ऑर्डर इट फ्रॉम द अमेजोन. सो दैट इज़ द आइडिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस तरह जो है वो ग्लोबल कस्टमरशिप क्रिएट किया, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट किया. अब उस आप इकोनॉमिक सिस्टम का बेनिफिट ये देखें कि आप अपने डेबिट कार्ड से यू विल पे इन रुपीज़, जबकि जो वो कंपनी है जिसको आप ऑर्डर करेंगे उसके अकाउंट में पेमेंट जो है वो डॉलर्स में जाए because of IMF and World Bank. So that is the global economic system कि पूरी. अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि global economic system has created global employment opportunities. मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान में freelancers बैठे हुए हैं, they are working for American and European companies and they are earning billions of dollars to the Pakistan's revenue annually and creating employment opportunities. So this is, and वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो वहाँ पे फ्रीलांसिंग के जरिए जो अपने कस्टमर की नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं. सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम एंड ग्लोबल कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर नाउ द एम्प्लॉयमेंट of a state citizen is no more linked or dependent on that particular state, बल्कि वो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ का भी हिस्सा बन सकता है, क्रिएट की जा रही है. सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ द कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम कि IMF वर्ल्ड बैंक की वजह से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम एक कॉमन ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है. दूसरा जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का वो है spread of knowledge and information through social media, through Facebook, through YouTube, through online other websites. You can access to all forms of knowledge and information which was considered literally a miracle or maybe like a dream 20 or 30 years back. अगर आज आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं भी जा सकते हैं, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं भी जा सकते हैं, तो ऑल ऑफ द लेक्चर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल एंड यू कैन सिंपली एक्सेस एंड यू कैन हैव ऑल दैट नॉलेज विदाउट गोइंग टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, विदाउट स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर. ओके, उसके बाद जो है ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं और ऑनलाइन जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, दोज आर बीइंग ऑफर्ड एंड वन ऑफ देम इज दिस एग्जांपल that if this lecture I'm communicating to you wherever you're sitting in Pakistan would not have been possible without globalization, because globalization has made the access of this information technology through which we are using it to spread knowledge and information. So that's the idea of the globalization. तीसरा जो benefit है globalization का या जो तीसरा impact है globalization का वो जो है जो positive impact है globalization का वो है people to people कम्युनिकेशन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिसको आप कहेंगे कल्चरल कम्युनिकेशंस एंड कल्चरल एक्सचेंजेस कि फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए यू कैन एक्सचेंज द आइडियाज़, यू कैन कम्युनिकेट टू द पीपल ऑफ अदर कल्चर्स, ऑफ अदर रिलीजन्स, ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ऑफ अदर स्टेट्स, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था इफ़ यू गो 20-30 years बैक, तो पॉसिबल नहीं था विदाउट फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल दैट. सो अब जो है इसने इस को डेवलप किया है ग्लोबलाइजेशन में. तीसरा जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो है द कॉमन आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स. जस्ट लुक एट द फेमिनिज्म मूवमेंट, जस्ट लुक एट द मी टू मूवमेंट. कि मी टू मूवमेंट यूरोप अमेरिका में स्टार्ट होती है, इट गोज़ टू यूरोप, इट गोज़ टू इंडिया एंड देन इट कम्स टू पाकिस्तान. और किस तरह जब मलाला यूसुफ़ज़ई पे अटैक हुआ तो पूरी दुनिया में औरतों ने प्रोटेस्ट किया. And there were American women, there were European women, there were women all over the world.
Not that they have any concern with the Malala, but they thought Malala was attacked because she was a girl. And being a woman or a girl, if a woman is attacked anywhere in the world, it is a threat to the woman everywhere in the world. This is called feminism, और ये वो feminism की ideology है. That led to the common women feminist movements, women fighting for their rights. और उसकी सबसे बड़ी example जो है वो 8 मार्च है, when the all over the world, globally, the women celebrate, women protest for their rights, and they protest against subjugation of women, and violence against women, and discrimination against women. So that is the idea that globalization has given us into form of common feminist ideology. Then, of course, globalization has given us the common legal system. अब आपके पास एक international law है, और वो international law जो है वो आपको ह्यूमन राइट्स की सूरत में, फ्रीडम ऑफ स्पीच की सूरत में, फंडामेंटल राइट्स की सूरत में प्रोटेक्शन देता है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स, जिनको इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उनको वायलेट नहीं किया जा सकता. अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगती है, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप हैं, बेशक उस मुल्क के सिटीजन आप नहीं हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो ग्लोबलाइजेशन ने प्रोसेस किया है, आपको तमाम वो फंडामेंटल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की फैसिलिटी हासिल है. आपको राइट टू लॉयर होगा, राइट टू डिफेंस होगा, आपको वो तमाम ह्यूमन राइट्स अवेलेबल होंगे, आपको उस तमाम किस्म की आज़ादियाँ होंगी. सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. उसके बाद जो एक और ग्लोबलाइजेशन ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है वो है इंटरनेशनलिज्म. कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड अ न्यू ट्रांसनेशनल आइडेंटिटी, जिसको आप इंटरनेशनलिज्म कहते हैं. लेट मी गिव यू एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, जब इराक के ऊपर अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के नाम पे अटैक करने का ऐलान किया तो पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए. शायद मुस्लिम वर्ल्ड में इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने प्रोटेस्ट अमेरिका में और यूरोप में हुए. वाई वर द यूरोपियंस एंड अमेरिकन पीपल protesting against their own government which was going to attack the Iraq? Because those people believe on the ideology of internationalism. What is that ideology? That we all are humans, we have religious differences, we have cultural differences, we have language differences, but we can only live together if we respect each other, you know, religion, cultures, languages, and all these differences, and we will fight together for our common future and common goal, and that is called internationalism, and that is called multiculturalism and pluralism. That we all have multicultures, we all have different thoughts, ideas, concepts. We cannot impose on each other, we can only dialogue and debate. So it's much better to live with these differences and respect each other and create a common future. That's why the people who consider war is an evil act, it will kill people, it will destroy societies and economies, they were protesting against that. So those were Europeans, maybe not Muslims, maybe not Iraqi. So this is the idea that the globalization promoted, the idea of the internationalism. Okay. Then एक और जो बड़ा बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन ने दिया है इंफॉर्मेशन, और वो है आइडिया ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी. मिसाल के तौर पे अब अगर आप देखें तो ट्विटर के ज़रिए या फेसबुक पेजेस के ज़रिए आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं, उन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जो बड़े की ओहदों पे बैठे हुए हैं. यू कैन कम्युनिकेट विद बॉलीवुड हीरो और एक्टर एक्ट्रेस, यू कैन कम्युनिकेट विद मेयर ऑफ न्यूयॉर्क क्योंकि उसका ट्विटर का अकाउंट है. और अगर न्यूयॉर्क के अंदर कोई अनजस्ट चीज़ होती है, कोई अनलॉफुल एक्ट होता है, कोई पुलिस वाला या कोई और जो है स्टेट ऑफिशियल आपसे मिसबिहेव करता है, आपके राइट की वायलेशन करता है, तो आप डायरेक्टली मेयर को कम्युनिकेट कर सकते हैं. सिमिलरली you can talk to the prime ministers and world leaders, and you can point out their policy failures. You can hold them accountable online. You can talk about the issues of governance. You can talk about the issues of accountability. अगर किसी जगह पे accountability नहीं हुई, आपके right की violation हुई है, you can directly talk to the prime ministers. तो वो जो gap था between institutions का, individuals का, जो previous structure of globalization, previous structure of governance में exist करता था कि आपको PM तक access नहीं है, CM तक नहीं है, किसी आला पुलिस ओहदेदार तक नहीं है, या किसी आला ब्यूरोक्रेट तक नहीं है. Now you can communicate them through Facebook, Twitter and WhatsApp. So it has radically redefined and revolutionized the idea of जो है गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी का. सो दीज आर द बेनिफिट्स जो ग्लोबलाइजेशन ने क्रिएट किया. इसके अलावा जो एक और बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन ने क्रिएट किया है वो है इट हैज़ क्रिएटेड न्यू काइंड ऑफ आइडेंटिटीज़. न्यू काइंड ऑफ आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन जब ना स्टार्ट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इसने ग्लोबल माइग्रेशन को और इमिग्रेशन को डेवलप किया. मिसाल के तौर पर अगर आप लंदन और न्यूयॉर्क में देखें तो इस वक्त जो लंदन और न्यूयॉर्क का 90%, 80 to 90% जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, दे आर नॉन यूरोपियंस, या वो पाकिस्तानीज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर साउथ एशियंस, इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज एंड कमिंग फ्रॉम द अफ्रीका.
अब these people who are now running the New York taxi services or cab services in London, New York, now they are not only providing billions of dollar of economy to their states या countries जिसको आप foreign remittances कहते हैं, but they are also, you know, representative and speaking their languages and culture in London and New York. And with the passage of time they will become the American, European citizen, British citizen. अब ये जो है by religion they may be Muslim, Christian, Hindus from Africa, South Asia, India, Pakistan, ठीक है. जैसे इनको अमेरिकन यूरोपियन नेशनलिटी मिलेगी दे वुड बी अमेरिकन यूरोपियन सिटीजन. जो इनकी एथनिसिटी होगी यानी कि इनकी जो रेस होगी वो वाइट ब्लैक होगी या ब्राउन होगी, वो साउथ एशियन होगी या अफ्रीकन होगी. नाउ लुक एट दैट, दे हैव मल्टीकल्चरल आइडेंटिटीज. व्हाट इज दैट? दे आर Americans, they are Pakistani by birth, they are American by nationality, they are Muslim by religion, and they are speaking Urdu or any other languages or Punjabi languages, but by culture they are not the Americans, and they are going to create a new kind of identities, and they are going to influence those local political system and economic system. Look at the Pakistani Indian businessman playing key role in American politics and other parts of the world. Look at the boxer Amir Khan, Pakistani playing leading the Europe and Britain. तो ये जो पूरी की पूरी नई न्यू काइंड ऑफ आइडेंटिटीज है, इट हैज चेंज्ड. अच्छा, उसके बाद जो ग्लोबल इमिग्रेशन और माइग्रेशन है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, इसने भी आपकी इकोनॉमी और कल्चर को बहुत ज़्यादा चेंज किया है. कि जो हज़ारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं जहाँ पे वो पैदा नहीं हुए, इकोनॉमी के लिए, जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, वो अपने साथ एक कल्चर को, एक लैंग्वेज को भी लेके जाते हैं, और उससे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो है सोसाइटीज़ के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, वो चेंजेस जो है इकोनॉमिक्स भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, कल्चरल भी है. सो दीज आर द सम ऑफ द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन या एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस और कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो उसी के साथ फिर हम लिंक करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक मूवमेंट्स और क्राइसिस को, और फिर किस तरह उसने पॉपुलिज्म, राइट विंग पॉलिटिक्स, ब्रेक्सिट को और चैलेंज टू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट किया, और इस्लामोफोबिया जो है. एंड देन वी विल एंड आवर लेक्चर. ओके. जो देवबंद थे उन्होंने बिल्कुल ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपना अपना स्थान दिया. ठीक है. सेकंड ये है कि सैयद अहमद खान जो थे यानी अलीगढ़ मूवमेंट, वो अंग्रेज़ों के लॉ नहीं, अब ब्रिटिश के लॉ नहीं तक के मौलाना कासिम जो थे और देवबंद को लगता तो बिल्कुल अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे. तो नंबर 3 पर जाकर के सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों को सियासत से, मुसलमान को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया, जबकि मौलाना रशीद अहमद जो थे और मौलाना कासिम ने इस राज को अपोज किया अपने मुसलमानों को, ताकि आप सियासी तौर पर भी हिस्सा लें, और उन्होंने मुसलमानों को जो है ना वो जिहाद की उन्होंने अपील की. नंबर 4 पर यह है कि जो वन स्कूल ऑफ थॉट में जो है वो इंटीग्रेटेड ब्रिटिश एटीट्यूड अपनाए कि अलीगढ़ मूवमेंट में ब्रिटिश के साथ काफ़ी उनके साथ कॉपरेट किया. फिर नंबर 5 पे अलीगढ़